एक्सरसाइजेज ऑफ प्रोसीजर्स के बारे में हम लोगों ने इससे पहले काफ़ी सारी एग्जांपल्स की हैं। प्रोसीजर को एग्जीक्यूट कैसे किया जाता, कुछ डिफरेंट लॉजिक इस्तेमाल किया गया। अब थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं और इस एक्सरसाइज से हमें और थोड़ा सा आइडिया होगा कि प्रोसीजर्स को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, इन आउट पैरामीटर्स की क्या इम्पोर्टेंस है। और इसके बाद प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में फिर हम देखेंगे कि वो कैसे एग्जीक्यूट होता है या उसकी कोडिंग कैसे मैनेज की जाती है। कंपाइलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स की तरह हम प्रोसीजर भी यूज़ करेंगे और फंक्शन भी यूज़ करेंगे उसी फॉर्म में जिस तरीके से हम प्रोसीजर करते हैं। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल वी आर कॉलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द प्रोसीजर। वी कैन कॉल दिस वन डिक्लेयर बिगिन एंड वी कैन से proc test for example is our procedure, and we can give the parameter, or in other way we can execute the procedure as on the SQL prompt. Similarly, we can execute the procedure by using SQL Server. So in this particular case, we have one example as an exercise. We can say that we have a procedure and it is calculating the again maximum salary, and we have two parameters. So one parameter is called in parameter and the other parameter is called out parameter. So in this particular case, we can say that procedure is basically having two arguments. So we have already done this one in a function as a return value, but here we are not using as a return value. So in this particular case, we can say that we can assign the value to this parameter, because this parameter is coming up from the argument, and we have calculated this value and we can assign to it. So we extract the maximum value from database, from schema, and then we assign this value to another variable to take it out. So how we can manage this one? We can manage another procedure called a calling procedure. So in the calling procedure, we declare this procedure as a in parameter, and out parameter is our another variable which is written over here. So in this particular case, we can see calling from this particular block. So if you put department number 20, and we can execute this one at the SQL prompt, and we will get this particular output. This is how we can say that the procedure are being called, and procedures are basically how these are executing and how they are managed from one procedure to other procedure. तो इस तरीके से प्रोसीजर्स को हम कॉल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि फंक्शन प्रोसीजर्स को हम किसी दूसरे पर्टिकुलर मॉड्यूल में या किसी थर्ड पार्टी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे जावा, विजुअल बेसिक, .NET। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अगर हम कॉल के साथ प्रोसीजर को कॉल करें डेटाबेस से, अगर कनेक्शन बना हुआ हो तो हम उसको भी वहीं पे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो क्लाइंट लेवल प्रोग्रामिंग जैसे विजुअल बेसिक और जावा से भी हम प्रोसीजर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और इस पर्टिकुलर हमारे जो केसेस हैं, इसमें डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन चूँकि डेटाबेस पे होती है और सर्वर साइड ही सारी प्रोग्रामिंग है, इस वजह से हम वो वाले कॉन्सेप्ट मैनेज कर रहे हैं जो प्योरली डेटाबेस से रिलेटेड है। हाँ, ये चीज़ हो सकती है कि डेटाबेस पॉइंट ऑफ व्यू से स्कीमा की जो वैल्यू है या जो स्कीमा के थ्रू हम करते हैं वो क्लाइंट टू सर्वर होता है, ना कि एप्लीकेशन टू सर्वर होता है। तो एप्लीकेशन टू सर्वर में हमारे पास थर्ड लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, और डेटाबेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम फ्रॉम क्लाइंट डेटाबेस टू सर्वर डेटाबेस के बेसिस पे हम फंक्शंस और प्रोसीजर्स को एग्जीक्यूट करते हैं। We have discussed already the function and procedures. Some examples we already discussed. Now we will discuss about the practical stuff related to functions and procedures. Let's suppose we have written this code of the function. Like for example, we say a function max value. So we can just go ahead and compile this one by putting on the SQL prompt, and we run this one. So this particular procedure has been compiled successfully, and then later on we can say that okay, let's see, we can call this procedure in another module which is called block. So let's suppose if you do this one, we can say that high salary is 5,000. So for time being there is no syntax error, and we can say that our function called and calling function both are successfully okay. Now let's see same example of finding the factorial. So let's run first of all this first particular module, which is a function called fact.
and we just compile this one here on schema. So it is successfully done fine. Now let's run this particular function here again on the schema, which is basically calling this particular one, and then we can say that for factorial 6 the answer is 720. So this is how we can do these things. Similarly, we can say that whichever the functions we have done and whichever the procedures we have done, so far we can say describe user underscore source, and we can say that okay, let's see that how many functions and procedures so far we have done in our schema. So let's make the select statement, select name comma type from user underscore source. So let's see that how many we have done it. So look at here all these things. Then we have seen that we have a maximum max function, and we have proc test, and similarly we have effect as well. So based on this one we have all these objects. It's not a kind of repeating thing, but it is just mentioning that how many rows they have. Based on those one these numbers are coming. Otherwise it has only one is test, second one is max cell, and third is factorial. So 3 functions and 3 procedures are normally have been created. So in our particular schema, functions and procedures are spreaded over the schema, and which will be further managed in the next topic, which is called basically packages. So in packages we can group them and collect them based upon the business requirements of the organization.